नम्रता, क्लियरली गोल्ड कैनॉट रिप्लेस इक्विटी एज एन एसेट क्लास. जरूर थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में गोल्ड हो सकता है, लेकिन 100% अगर गोल्ड रखेंगे तो ना आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ना आपके एक्सपीरियंस अच्छे रहेंगे. हमें लगता है कि 5 से 15% डिपेंडिंग ऑन वन पर्सन रिस्क प्रोफाइल वन कैन कीप गोल्ड इन द पोर्टफोलियो. ये जरूर है कि जब जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है एक तरफ से, गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलता है. लेकिन ये टेम्पररी होता है. अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स गोल्ड के देखेंगे तो वो कभी भी इक्विटी रिटर्न से बेहतर नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म में. क्लियरली जो इंटरेस्ट रेट्स बाहर की दुनिया में है और यहाँ पे जो है, आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम on one platform. Clearly, the inflation rates in US, in the Western economies, have been much higher. They are definitely much higher than the interest rates that are there in those economies. यानी कि जो रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं वो सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में है. जबकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन 6% से नीचे आना चाहिए मार्च 2023 में, और उससे आगे जाके और भी नीचे आना चाहिए. और हमारे रेपो रेट्स ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए. तो उस हिसाब से नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में नहीं है. इसका मतलब है कि आगे जाके शायद हमको इतने सारे इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं दिखाई देंगे. तो उस हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट्स का नेगेटिव जो कोरिलेशन है इक्विटी वैल्यूएशन के साथ, वो कहीं ना कहीं पॉज होना चाहिए यहाँ के लेवल्स पे, या शायद थोड़ा सा और टाइम के बाद. What happened after 2008, we all know. Yes, markets did fall for some time, but the returns thereafter have been reasonably strong. We did see that post-pandemic as well. Yes, there was a crisis for a few months in the market, along with what happened in the economies and the businesses. But much before the economy started to revive or the businesses started to revive, we did see markets reviving, and markets have given very handsome returns. So to that extent, I don't think one should be panicking because of some of these unknown events hitting you. Yes, as long as you are मेंटेनिंग योर एसेट एलोकेशन, आई थिंक इट्स फाइन. बट अगर आपका एसेट एलोकेशन ठीक नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 2020 में बिफोर द पैंडेमिक अगर आपका एसेट एलोकेशन पूरे के पूरे 100% इक्विटी में रहा है, तो ऑब्वियसली द पैनिक वुड बी मोर, एंड इन दैट केस यू आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक्स. But as long as you keep monitoring your portfolio, keep allocating as per your risk profile and return expectations, one should not be worried about some of these factors, because these are all very difficult to predict. I don't think you can make a portfolio thinking of a war or thinking of a geopolitical issue, etc. Yeah, one should invest in an ESG theme only because we also need to leave our planet in a better shape for our next generation, right? Every time we can't be thinking just about returns and nothing else. There are various ways to make money, but if you're investing in an ESG fund and if the fund does well, you not only you make money, but you're also nudging the companies which are part of that portfolio or which are not part of that portfolio to do certain things in the right way that you want them to be. For example, if companies are focusing well on the environment and the social factors and the governance factors, they are more likely that they would be part of the portfolio. If they are not, they will be likely to be excluded. If that is so, there will be pressure on the companies to follow certain norms of environmental standards or certain levels of social and governance factors, etc. So that's how, over a period of time, you will be able to nudge most of the industry to do the right kind of work. Right? It's not going to happen overnight. It's not that the returns are going to be very different than a normal fund, and that's not what one should be aspiring to be, or one should be expecting it to be. First of all, I don't know how many of your investors would have made money on IPOs on a consistent basis and also on a large scale, right? Everybody gets a lot of thrill because you get allotment. Not everybody in the neighborhood is getting an allotment. Maybe in some cases, the stocks are also going up 70, 80, 100% on listing. So you think that you're making a lot of money. But on a portfolio of a complete wealth, how much of that is actually is adding to your overall portfolio? That's what you need to see.
I think when you look at that and also look at the percentage of companies which consistently do well after the IPO, you will realize that not more than 10% of companies which get listed generally tend to do well over a long term. So, I mean, it's good for thrills, but from a wealth creation perspective, I think it's better to remain in the stocks in a diversified manner where you understand the businesses, where you understand the valuations. I'm not saying that IPOs you can't understand the businesses or not the valuations, etc. But it's just that the track record is limited. The management is still not that much known to the investor community in terms of whether their interests are aligned to minority shareholders or not. There are various other factors. देखिए आज के दिन में अगर आप देखते हैं लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं क्योंकि जब भी मैक्रो हेडविंड्स होते हैं इकोनॉमी में मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज के लिए वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के जो वैल्यूएशंस है वो लार्ज कैप कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा है। और ये भी सच है कि अगर कोविड लो से लेके आज तक का मार्केट परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट ईयर में इतना परफॉर्मेंस नहीं था मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का, लेकिन ओवरऑल अगर आप लास्ट 2.5 या 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप का काफ़ी सारा आउट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि अभी भी यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो शायद ही लमसम इन्वेस्टमेंट्स आज के दिन में करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कोटक म्यूचुअल फंड का हमारा व्यू ये है कि आज के दिन में थोड़ा लार्ज कैप में ओवरवेट होना चाहिए, स्लाइट ओवर अंडरवेट इन मिड एंड स्मॉल कैप्स। लेकिन अगर किसी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करना है तो ये इतना महंगा मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको टच ही नहीं करना है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन निवेश की जो टेनर होगा वो लंबा होना चाहिए। शायद मेरे आंसर से भी काफ़ी इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट होंगे, बट ज़रूर उनको समझाना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एसेट क्लास का रिटर्न्स देखेंगे, इट शुड बी कंपेयर्ड विद इन्फ्लेशन। So let's say over a cycle, inflation is about X percentage. Anything that beats that inflation level over a long term is something that is adding to your wealth. नहीं तो आपका wealth erode हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप इक्विटी एसेट क्लास को देखेंगे तो शायद आपको 2-3% या 4% इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी में आज के दिन में 10 से 12% का जो CAGR रिटर्न्स बोलते हैं, अगर वहां तक रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो वो ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन है। उससे ज्यादा हो सकता है कभी किसी साल में, कम भी हो सकता है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म आई थिंक 10 to 12%। यस, आई वुड से 3 important things for any investor to look at. One is asset allocation, second is regular investing discipline, and third is long-term focus. I think if you can manage these 3 factors, then I think the expectations are also set right and the experience should also be good for any investor. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। जैसे आप सब जानते हैं कि हर एपिसोड में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, कमोडिटीज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। और हमारे हर एपिसोड में हम ट्राई करते हैं कि हम एक ऐसे एक्सपर्ट को लेके आए, एक ऐसे इंडिविजुअल को लेके आए who comes with vast knowledge और जो हमारे सारे सवालों का जवाब दे सके। आज भी हमारे साथ we have someone very knowledgeable, someone with a lot of experience. His name is Mr. Harsha Upadhyaya, जो प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है फॉर इक्विटी एट कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। हर्षा उपाध्याय ही हेड्स द इक्विटी डेस्क एट कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी और वो डायरेक्टली भी काफी फंड्स मैनेज करते हैं, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो फॉर्मली इट वाज कॉल्ड कोटक सेलेक्ट फोकस, और फिर कोटक अपॉर्चुनिटीज एंड कोटक टैक्स सेवर। हर्षा को जो है ही हैज ओवर 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस स्प्रेड अक्रॉस इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट। उन्होंने प्रीवियसली DSP BlackRock, UTI एसेट मैनेजमेंट, रिलायंस ग्रुप और SG एशिया सिक्योरिटीज के साथ भी काम किया है। हर्षा completed his Bachelor of Engineering in Mechanical from National Institute of Technology, Suratgarh, and he also holds a postgraduate diploma in Management and Finance from Indian Institute of Management, Lucknow. He also holds a Chartered Financial Analyst Charter from the CFA Institute, USA. हर्षा काफी स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं। He was also a hockey player while at university.
Hello, everyone, and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Thank you so much for joining in today. Firstly, I would like to wish all of you a very happy new year. And today, of course, we have with us Mr. Harsha Upadhyaya. So let me get started with the questions. So Harsha, हम सब जानते हैं कि when it comes to the Indian equity markets, पिछले कुछ सालों से they've been affected, not just because of domestic factors, but also because of the global factors. और अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, I've been talking to a lot of my friends in retail and manufacturing. वो बोल रहे हैं कि business पिछले 3 महीनों से काफी slow down हो गया है. And there was a recent article in newspaper which indicated कि जैसे mobile sales कम हो गई हैं. So this basically shows कि economy थोड़ा slow हो रही है, right? There's a possibility of recession in some of the bigger economies. और जिसकी वजह से जो investors हैं वो अभी recent past में gold की तरफ मुड़ रहे हैं. They're looking at gold as an investment. So, geopolitical risks could really push gold prices much higher in 2023. तो ऐसे सिनारियो में जो है इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? What is your take on this? Namrata, clearly gold cannot replace equity as an asset class. जरूर थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में गोल्ड हो सकता है, लेकिन 100% अगर गोल्ड रखेंगे तो ना आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ना आपके एक्सपीरियंस अच्छे रहेंगे. तो उस हिसाब से हमें लगता है कि 5 से 15% डिपेंडिंग ऑन वन पर्सन रिस्क प्रोफाइल वन कैन कीप गोल्ड इन द पोर्टफोलियो. ये ज़रूर है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, एक तरफ से गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है. अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स गोल्ड के देखेंगे तो वो कभी भी इक्विटी रिटर्न से बेहतर नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म में. और दूसरी बात जो इंडियन इन्वेस्टर्स याद रखना चाहिए ये है कि अभी भी यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है. जो आप गोल्ड प्राइसेस देखते हैं रुपी बेसिस पे, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड हुआ है. जिस दिन गवर्नमेंट को लगेगा कि इस वजह से स्मगलिंग ज़्यादा हो रहा है या हो सकता है, तो उस दिन इंपोर्ट ड्यूटी घट सकता है. तो यानी कि गोल्ड प्राइसेस जो यूएस डॉलर के बेसिस पे शायद वहीं का वहीं रहे, लेकिन रुपी टर्म्स में वो नीचे आ सकता है. तो ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए. जरूर 5, 10, 15% हो सकता है. Sure. So the maximum 15% is what you recommend, not more than that. Yes. Fair enough. तो अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें हर्षा, इन्फ्लेशन हैज गॉन थ्रू द रूफ. हम सब जानते हैं कि यूएस में 5 डेकेड्स में दिस इज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग. और ऑफ कोर्स यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया से भी ज़्यादा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, विच इज़ अ वेरी रेयर सिनारियो, राइट? अगर हम स्टैंडर्ड मेजर्स देखें, प्रोड्यूस लिक्विडिटी, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स. लेकिन जब लिक्विडिटी कम होती है तो ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट्स गेट इम्पैक्टेड. तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो अभी बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, विच ऑब्वियसली लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एज वेल. और इसकी वजह से जो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं दे आर मूविंग बैक टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनको म्यूचुअल फंड्स में इतने रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे. एंड आई थिंक दे ऑल्सो बिलीव कि शायद इस साल डेट और इक्विटी एट पार रिटर्न्स देने वाले हैं. So what is your opinion on this in terms of interest rates, and what should we do about a scenario like this? क्लियरली जो इंटरेस्ट रेट्स बाहर की दुनिया में है और यहाँ पे जो है, आई डोंट थिंक यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम on one platform. Clearly, the inflation rates in US, in the Western economies, have been much higher. They are definitely much higher than the interest rates that are there in those economies. यानी कि जो रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं वो सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में है. जबकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन 6% से नीचे आना चाहिए मार्च 2023 में, और उससे आगे जाके और भी नीचे आना चाहिए. और हमारे रेपो रेट्स ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए. तो उस हिसाब से नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में नहीं है. इसका मतलब है कि आगे जाके शायद हमको इतने सारे इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं दिखाई देंगे. तो उस हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट्स का नेगेटिव जो कोरिलेशन है इक्विटी वैल्यूएशन के साथ, वो कहीं ना कहीं पॉज होना चाहिए यहाँ के लेवल्स पे, या शायद थोड़ा सा और टाइम के बाद. और उसी समय पे हमें ये भी देखने को ज़रूर मिलेगा जहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो घट गए थे कॉर्पोरेट्स की, वो शायद नॉर्मलाइज होने का टाइम भी आ रहा है.
तो उस हिसाब से जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट्स पे पॉज आता है या डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, तो हमें नहीं लगता है कि इक्विटी वैल्यूएशंस यहाँ से और बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकते हैं। ज़रूर, आई मीन, nobody can predict equity market returns. There will be volatility in markets, but on a sustainable basis, very unlikely that you will see valuations going down. So given that, I don't think you can replace equity assets with fixed income funds or with fixed deposits, and both of which are not so great in terms of tax treatment as well. इक्विटी में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 महीने के बाद उसको लॉन्ग टर्म गिना जाएगा और टैक्स भी कम होता है। तो ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है कि जो एसेट एलोकेशन जो एक इन्वेस्टर करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एसेट एलोकेशन इस साल में करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स थे वो लास्ट ईयर बहुत कुछ दिखाई दिए हैं और उसके इम्पैक्ट भी मार्केट में हुआ है। मार्केट ज़रूर मार्जिनल रिटर्न दिया है लास्ट ईयर, बट उसी को प्रोजेक्ट आगे करना गलत बात है। जो 2021 में भी हम यही देखने को मिला था हमें, कि जब बहुत सारे रिटर्न्स अच्छे मिले थे स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में, people were expecting that to continue in 2022, which did not happen. So there is no reason to believe that whatever happens in the previous 12 months will get replicated replicated. in the next 12 months. Fair, fair. Oh, absolutely fair. But I'm just saying, from a short-term point of view, I'm sure a lot of investors might look at, shifting. So do you recommend that in the short term, or do you say just stick to the asset allocation strategy you already have? No, clearly, equity valuations have also come to a fair range of valuations. They are just slightly above fair range, I would say. So, given that, I don't think you need to be too negative on equities. And equities definitely discount a future much ahead of time. So, you don't know whether it's going to discount 6 months down the line, 6 months future, or the future that is 1 year ahead. So, these are the things which would also depend on sentiments. But definitely, this is not a time to be underweight on equities. What we are saying is neutral weight to equity allocation. When I say neutral weight, if or she is looking at, let's say, X percentage of equity in the portfolio, we should be somewhere close to that X percent at this point of time. There is no one size fits all kind of a solution. So everybody is a different investor. Somebody may be looking at 50% equity, someone may be looking at 70% equity. But whatever that number is, we should be closer to that number at this point of time, with a tilt towards large caps within equity and a small underweight towards mid and small caps. But definitely not a time to be negative on equities. Fair enough. So, हम हमेशा बोलते हैं कि equity market is driven by greed and fear, and I'm sure you may agree with me on this. लेकिन हमने देखा है कि बहुत in a very short span of time, अगर हम equity investors की बात करें, for example, जब global financial crisis हुआ था 2008 में, तो many investors panicked. अभी जब pandemic हुआ, again investors panicked. Russia-Ukraine war, again there was panic. So, आपका क्या advice होगा for investors like these who tend to get very scared and panicked in situations like this? Should we panic? And, what should we do? Or should we do anything different when we see a situation like this? उस प्रश्न का आंसर तो सबके सामने है नम्रता. What happened after 2008, we all know. Yes, markets did fall for some time, but the returns thereafter have been reasonably strong. We did see that post-pandemic as well. Yes, there was a crisis for a few months in the market, along with what happened in the economies and the businesses. But much before the economy started to revive or the businesses started to revive, we did see markets reviving, and markets have given very handsome returns. So, to that extent, I don't think one should be panicking because of some of these unknown events hitting you. Yes, as long as you are मेंटेनिंग योर एसेट एलोकेशन, आई थिंक इट्स फाइन. बट अगर आपका एसेट एलोकेशन ठीक नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 2020 में बिफोर द पैंडेमिक अगर आपका एसेट एलोकेशन पूरे के पूरे 100% इक्विटी में रहा है, तो ऑब्वियसली द पैनिक वुड बी मोर, एंड इन दैट केस यू आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक्स. But as long as you keep monitoring your portfolio, keep allocating as per your risk profile and return expectations, one should not be worried about some of these factors, because these are all very difficult to predict. I don't think you can make a portfolio thinking of a war or thinking of a geopolitical issue, etc.
But as far as your overall asset allocation is concerned, you can manage that by being in a certain level of risk that is good for you, or that can be tolerated by you. Apart from that, I don't think one needs to panic. Especially these are the times if you are low on equity or any other risk asset, for example, those will be the times to actually increase your allocation, because that's the time when there is a lot of uncertainty, haziness, would be the time where the valuations would also be favoring you. When everything is very, very clear and everything is very bright in terms of future prospects, you may not really get a good valuation to enter at. So this is something of a balancing game that you'll have to play. How much to bet at each of these points. But generally, for a normal investor, it's better to maintain a regular investment discipline and focus on the long term, because what happens in the short term is definitely not going to be predicted. I've also read this somewhere that so I have some experts who tell you that when others are greedy, you should be fearful, and when others are fearful, is then you should be greedy. So I guess that's how it probably works out sometimes. Sure. So अब अगर हम in the last few years हमने कुछ interesting themed funds देखे हैं which have been launched by many AMCs in India, right? Smart beta funds, for example. Now ऐसी एक जो theme काफी pick up कर रही है in the recent past is the ESG theme. And we all know the ESG theme basically follows the guidelines of principles of responsible investing, right? So, agar hum basically good companies, and when we are looking at ESG investing, so ESG जो picks होते हैं इंडिया में, do you think it's just a hype ESG as a theme? Do you think companies जिनके ESG scores होते हैं, क्या वो उनको window dressing कर सकते हैं for a better score? Because I guess as a fund manager, you're picking up ESG themed companies based on the ESG score, right? And are ESG funds really unique from other equity funds? I mean, इतनी famous है as a strategy, as a theme. It'll be great if you can tell us a little bit about ESG as a theme, and how we should, as investors, look at this theme in our portfolio. Yeah, one should invest in an ESG theme only because we also need to leave our planet in a better shape for our next generation, right? Every time we can't be thinking just about returns and nothing else. There are various ways to make money, but if you're investing in an ESG fund and if the fund does well, you not only you make money, but you're also nudging the companies which are part of that portfolio or which are not part of that portfolio to do certain things in the right way that you want them to be. For example, if companies are focusing well on the environment and the social factors and the governance factors, they are more likely that they would be part of the portfolio. If they are not, they will be likely to be excluded. If that is so, there will be pressure on the companies to follow certain norms of environmental standards or certain levels of social and governance factors, etc. So that's how, over a period of time, you will be able to nudge most of the industry to do the right kind of work. Right? It's not going to happen overnight. It's not that the returns are going to be very, very different than a normal fund, and that's not what one should be aspiring to be, or one should be expecting it to be. It's just that not only you are making money, you are just nudging things to happen in a certain right way, is what ESG funds would allow you to do. Yes, it's in a very nascent stage. There are very few mutual funds in in the Indian context, where ESG investment practice is followed. But over a period of time, we expect that there will be a lot more funds which will focus on ESG investments. एंड ज़रूर ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटर्न की वजह से ये आगे बढ़ेगा. एज आई सेड, ये भी हमारा एक फर्ज बनता है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या करें. Along with making money, we can also nudge the corporates to do right things. Yeah, but just the first question that I asked you, कि क्या companies अपने ESG score को window dressing कर सकती हैं? Is it possible? See, it's finally up to the portfolio managers and the research analysts to analyze the companies and see where they are. It's not that just because of an ESG score somebody is coming into the portfolio. For example, what we do in our ESG fund, not only we look at ESG scores and the ratings, but we also look at whether on a fundamental basis it makes sense to invest in those companies. Otherwise, what will happen? Hypothetically, you will create a portfolio with very high ESG rated companies. They may or may not give you great returns, right? Because every company is different.
It may be already quoting at a very high valuation. While it is very great on ESG standards, it may not give you a return. So, at some level, the portfolio managers will also analyze all of these factors and try to create a balance between the financial projections and the financial valuations of the company, where they're currently trading, what are the prospects, etc., which is anyways you will do for all kinds of funds that you manage. But in addition to that, you will also look at the ESG scores, and not just the static scores, but also how a company is improving. Because there could be a company which is very low on ESG score today, but if they are taking right steps, that is also needs to be acknowledged, because finally they are making a positive impact to the overall ESG standards. So there are many of such issues that need to be taken in the whole context, and ultimately, what comes out in terms of a research report or a company report may not be the final input. Right. Along with that, you will also do your analysis and see what is right and what is valued in that particular stock already, etc. So, given all that, I don't think one should be looking at just the ESG rating, or for that matter, even the profitability numbers, right? I mean, if you just look at the profitability numbers and start investing in companies, you are forgetting about valuations, and that's not good. Right? So, it's the same thing. In addition to that, you are looking at ESG ratings here. That's all. Okay. Then what percentage of our portfolio do you think हम ESG फंड में डाल सकते हैं? जैसे अगर मान लो थीमेटिक में हमें 15 या 20% डालना है, तो उसमें ESG में हम कितना डाल सकते हैं? नंबर ओवरऑल थेमेटिक फंड्स का अलोकेशन मेरे ख्याल से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो उस हिसाब से अगर आप गोल्ड भी वहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं या कुछ और सेक्टर फंड्स या थेमेटिक फंड्स ले रहे हैं, तो सब कुल मिलाकर आपका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नहीं तो शायद आप एक तरफ का रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं. सपोज यू आर टेकिंग अ सेक्टर फंड और एनी अदर फंड, देन यू आर टेकिंग टू मच ऑफ रिस्क इन दैट पर्टिकुलर थिंग. Okay, okay. So now अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड्स, हम थीम्स की बात कर रहे हैं, देयर आर आल्सो सम म्यूचुअल फंड्स जो बहुत यूनिक थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, समथिंग लाइक इन्वेस्टिंग इन IPOs. Do you think investors have a great opportunity in such themes? First of all, I don't know how many of your investors would have made money on IPOs on a consistent basis and also on a large scale, right? Everybody gets a lot of thrill because you get allotment. Not everybody in the neighborhood is getting an allotment. Maybe in some cases, the stocks are also going up 70, 80, 100% on listing. So you think that you are making a lot of money. But on a portfolio of a complete wealth, how much of that is actually adding to your overall portfolio? That's what you need to see. I think when you look at that and also look at the percentage of companies which consistently do well after the IPO, you will realize that not more than 10% of companies which get listed generally tend to do well over a long term. So, I mean, it's good for thrills, but from a wealth creation perspective, I think it's better to remain in the stocks in a diversified manner where you understand the businesses, where you understand the valuations. I'm not saying that IPOs you can't understand the businesses or not the valuations, etc. But it's just that the track record is limited. The management is still not that much known to the investor community in terms of whether their interests are aligned to minority shareholders or not. There are various other factors. And always, mind you, people who are selling the stock in an IPO are the insiders, right? It is either the promoters or the private equity investors or some of the other financial investors who are part of the firm. So when they are selling the stock, why should you assume that it is going to be at a very low valuation? So that's the primary thing that everyone needs to understand. At least in a secondary market, you are competing with some other investor who may or may not have any other edge in terms of understanding the business. But in an IPO, when you are buying the stock, you are actually betting against the promoter of the company or the financial investor of the company who knows much more than you. So I think one should remember that. Yeah, I mean, I think I'm completely with you on this particular, aspect. So yes, okay. अब ना हम थोड़ा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड्स जो हैं, दे इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन,
So we can start our investment journey with flexi-cap funds, and I think it's a very it's a good thing to be to believe in. But then, you know, of course, we all know the difference between flexi caps and multi caps. Flexi caps में जो है restriction नहीं रहता है, in terms of market capitalization आप कितना भी large mid और small में डाल सकते हैं. Mid cap multi cap funds में you have that restriction. तो अगर हम flexi cap funds की बात करें, how should an investor approach a flexi cap fund, and is it a good category to start your mutual fund journey with? The flexi cap category. I would say along with large cap funds, flexi cap funds category would be entry points for a new investor, because these are generally more conservative than a small cap fund or a mid cap fund or even a multi cap fund, because there is no such restriction of holding a certain level of mid caps or small caps, which can give you very good returns, but they also come with a lot of volatility. Right? And in case of a large cap fund, for example, 80% needs to be invested in large cap, while there is no such requirement for a flexi cap, but most flexi cap funds in the country are also tilted more towards large caps. So given that, मेरा ये मानना है कि अगर नए इन्वेस्टर्स हैं और उनको ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखना है या बहुत कुछ सोचना नहीं है मार्केट्स के बारे में, और एक बार इन्वेस्ट करके शायद मतलब कंटिन्यू करना है SIP के थ्रू या जस्ट होल्डिंग ऑन टू दोज इन्वेस्टमेंट्स, फिर मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स वुड बी बेटर रूट टू डू दैट. In case of a mid and small cap fund, you can still do that, not by doing lump sum investments, but maybe by doing staggered regular investments. लेकिन आपका जो निवेश का टेनर रहना चाहिए वो शायद जरूर ज़्यादा होना चाहिए, so that you manage the volatility if at all there is something in the interim. But in case of large cap funds or flexi cap funds, generally the volatility levels are much lower, and also over a period of time, investors tend to have better experience because they wouldn't really witness that kind of drawdowns that you see in some of the other categories. Yeah. But I'm sure even for large cap and flexi caps, हमारा time horizon long term ही होना चाहिए. Right? Yes. For any equity investment, tenor has to be longer, but for mid and small caps, it has to be even more than what you do for a large cap fund or a flexi cap fund. Right. Understood. Okay. अब अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें, दे फॉल द मोस्ट जब मार्केट्स गिरती हैं, राइट? डू यू थिंक दिस प्रेजेंट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स? तो मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ और अभी मार्केट गिर रही है, तो क्या मुझे मिड कैप या स्मॉल कैप फंड से इन्वेस्ट करना चाहिए? सो फॉर एग्जाम्पल, कोविड वॉज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, राइट, जहाँ हमने वी सॉ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंटरिंग द इक्विटी मार्केट्स एट दैट पर्टिकुलर स्टेज. So should we wait for a correction so that हम lump sum कर पाएं, or should we just start our investments with mid cap and small cap funds at times like these जब markets गिर रही हैं? देखिए, आज के दिन में अगर आप देखते हैं लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैक्रो हेडविंड्स होते हैं इकोनॉमी में, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज के लिए वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है. दूसरी बात यह है कि अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के जो वैल्यूएशंस है वो लार्ज कैप कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा है. और ये भी सच है कि अगर कोविड लो से लेके आज तक का मार्केट परफॉर्मेंस देखेंगे, लास्ट ईयर में इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं था मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का, लेकिन ओवरऑल अगर आप लास्ट 2.5 या 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप का काफ़ी सारा आउट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन. तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि अभी भी यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में. तो शायद ही लमसम इन्वेस्टमेंट्स आज के दिन में करना चाहिए. जैसे मैंने बताया, कोटक म्यूचुअल फंड का हमारा व्यू ये है कि आज के दिन में थोड़ा लार्ज कैप में ओवरवेट होना चाहिए, स्लाइट अंडरवेट इन मिड एंड स्मॉल कैप्स. लेकिन अगर किसी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करना है तो ये इतना महंगा मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको टच ही नहीं करना है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन निवेश की जो टेनर होगा वो लंबा होना चाहिए. Understood. Okay. अब अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, that's 2020 and 2021, these were the years जब, like I said, a lot of investors started investing.
And they started investing in international funds क्योंकि of course international funds at that point were giving us great returns. हमने ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखे जो लॉन्च हुए बेस्ड ऑन यूएस मार्केट्स, चाइना, यूरोप मार्केट ओरिएंटेड फंड्स एंड व्हाट नॉट, राइट? लेकिन अब अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करें तो प्रॉब्ली अमंग्स द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द ईयर 2022. सो इन योर ओपिनियन आपको क्या लगता है कि हाउ शुड अ करंट एंड जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्पेस को कैसे देखेंगे? तो मतलब शुड आई लुक एट इंटरनेशनल फंड्स कंसिडरिंग कि अभी डोमेस्टिक फंड्स, डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, or should I still have an allocation to international funds? What should my strategy be? नम्रता, देखिए ये एक मिस्टेक है जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टर्स डू, जो प्रीवियस 12 मंथ्स के या प्रीवियस जो भी पीरियड होगा वहाँ के रिटर्न्स देखते हैं और अज्यूम करते हैं कि वो रिपीट होगा. तो इसी में सब गड़बड़ होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी थीम या कोई भी कैटेगरी, वो ये तो नहीं हो सकता है कि हर साल सेम काइंड ऑफ आउट परफॉर्मेंस आए. जैसे कि लोगों ने मिड एंड स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस देखा और लास्ट ईयर सब मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 2021 का जो परफॉर्मेंस है वो 2022 में रिपीट हो जाए, वो नहीं हो. सेम इज ट्रू विथ इवन इंटरनेशनल फंड्स और एनी अदर थीम दैट यू लुक एट. First of all, international funds should also be a part of your thematic allocation, because the understanding of international markets is going to be much lesser than what you understand about Indian domestic business. And on top of that, if you are talking about investing in international funds today, you should also be aware of the fact that the global economies, by and large, are struggling more than Indian economy has been, and they will remain so for at least longer period of time, even from these levels. So to that extent, I don't think you should be putting too much money into international funds at this point of time. But yes, if you are a regular investor, if you want to focus on long-term investing, these are very good levels to look at, and you should keep investing. But again, don't compare the returns of the past and expect that that has to happen. Everything goes in a cycle, but you will get your returns if you are focused on a long term. But our preference would be domestic equities at this point of time, given what's happening in the global economy. तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अभी वी शुड फोकस मोर ऑन डोमेस्टिक एक्विटीज, बट ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल फंड्स वुड मेक लिटिल बिट सेंस, सो थोड़ा बहुत वी कैन पुट इन इंटरनेशनल फंड्स. अब अगर हम बैंकिंग फंड्स की बात करें, बैंकिंग एंड मेनली पीएसयू, दे हैव स्टार्ट गिविंग ग्रेट रिटर्न्स, राइट? Banking sector was one of the best performing sectors of 2022. So do you think investors ko jo hai, they should move on from market cap investing and focus on these kind of structural themes? Again, I mean, my answer would be same. Banking is another theme. Just because it has done very well in the recent past, it doesn't mean that it will continue to do well. Whereas, I mean, at least for now, we believe that it will continue to do well even in the short term. But it comes with its own set of risks, right? Any diversified fund will have anywhere between 25 to 35, 40% in banking. And if you're taking additional banking exposure, that's over and above what you will have in a diversified fund. So you should be aware of the kind of risk that you will be taking by taking a larger proportion of any theme. And especially in case of banking, it will be much higher. So that's what it is. But overall, even in the year 2023, we expect that banking stocks should continue to do well. That's been our view. We continue to have overweight exposure on banking. But again, it's focused more on the large private and PSU banks, because this is a period where interest rates have started to move up and they will remain higher for some time, and the credit growth has picked up. So when credit growth has started to move up, there will be a scarcity of low-cost deposits. And that is where some of the larger banks will have much more strength in terms of continuing with that rather than smaller banks. So to that extent, rather than NBFCs and smaller banks, one should focus on large banks. Yeah, so the reason I asked you about this banking sector fund was because हमारे जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको दो सेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, एक बैंकिंग, एक टेक्नोलॉजी. हमें हमेशा एक क्वेश्चंस आते हैं कि बैंकिंग अच्छा करेगा, टेक्नोलॉजी अच्छा करेगा. सो आई थॉट इट्स ओनली फेयर टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. I'm sure same thing would have happened even 1 year back, and everyone would have asked more on IT than banking. But IT has not given so much of returns in the year 2022, right? So that's why, going by past returns, again I'm saying this, I'm repeating it like a broken call.
But I mean, that's what it is. You can't just go by past returns and expect that to continue. Sure. So, Harsha, what is your take on contra funds? I mean, जो हम investors होते हैं, क्या हमें contra funds देखने चाहिए as a strategy in our portfolio? Little bit about contra funds, if you can tell us. कॉन्ट्रा फंड्स को भी मैं थीमेटिक कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलग होता है। तो कॉन्ट्रा का ये मतलब है कि अगर कोई इंडस्ट्री अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में आप दूसरे जो डाइवर्सिफाइड फंड्स है उससे पहले शायद आप पोजीशन बनाएंगे, या अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा नहीं दिख रहा है तो शायद आप धीरे धीरे से कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में एक पोजीशन बनाते जाएंगे, और ओवर a period of time that should work. That's a different investment approach which needs more patience from the investors as compared to diversified funds. So I would put it in the basket of thematic funds. Okay, so Harsha, the next question is really about, when we're talking about equity funds, एक तो जब हम equity funds में invest करते हैं तो एक अच्छा return क्या माना जाता है? हर कोई बोलता है कि अगर आप equity में पैसा डालेंगे तो आपको अच्छे returns का probability है, लेकिन वो अच्छा return होता है क्या है? So as an investor, what should my expectation be in terms of returns? Because, as an investor मुझे लगता है कि बहुत सारे investors जिन्होंने post COVID शुरू किया था, they had a good time, and then they are now very disappointed with the performance, right? So probably बहुत सारे investors आज के time में अपना motivation lose कर रहे हैं because of low returns. So I think we should set the right expectation कि हमारा expectation returns के मामले में क्या होना चाहिए as an investor. शायद मेरे आंसर से भी काफी इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट होंगे, बट जरूर उनको समझाना जरूरी है। अगर आप कोई भी एसेट क्लास का रिटर्न्स देखेंगे, इट शुड बी कंपेयर्ड विद इन्फ्लेशन. So let's say over a cycle, inflation is about X percentage. Anything that beats that inflation level over a long term is something that is adding to your wealth. नहीं तो आपका wealth erode हो रहा है. तो उस हिसाब से अगर आप इक्विटी एसेट क्लास को देखेंगे तो शायद आपको 2-3% या 4% इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं. तो मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी में आज के दिन में 10 से 12% का जो CAGR रिटर्न्स बोलते हैं, अगर वहां तक रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो वो ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन है. उससे ज्यादा हो सकता है कभी किसी साल में, कम भी हो सकता है, लेकिन ओवर ए लॉन्ग टर्म आई थिंक 10 to 12%. Yeah, so assuming अभी हमारा inflation 5.86% है, तो 10 से 12% should be our return expectation approximately. Okay, and suppose investors जो हैं उन्होंने अपना equity fund identify कर लिया है, but those funds have not performed well in the long term, right? तो exit strategy क्या होना चाहिए? I mean, should they exit from such investments, या फिर कोई ऐसी approach होनी चाहिए जो हमें follow करनी चाहिए? Because performers तो change होते रहते हैं हर साल, right? Today's performers are not going to be tomorrow's performers. तो मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे रीबैलेंस करूं इफ आई हैव इन्वेस्टमेंट्स इन माय पोर्टफोलियो, फंड्स इन माय पोर्टफोलियो जिन्होंने लंबे समय में भी मुझे रिटर्न्स नहीं दिए हैं? उस पे तो कोई भी इन्वेस्टर हो, होपफुली दे आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सम एडवाइस, या नहीं तो उनको इतना नॉलेज हो कि वो चूज करे राइट फंड्स. लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेना या बेचना ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है. तो आपको ये भी देखना रहेगा कि पोर्टफोलियो में क्या कंपनीज हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, whether that's the right strategy to pursue at that particular point of time or not. Various factors you need to see. Has there been any change in the philosophy of the fund, for example? If that happens, even if the returns are good, you may not get the same experience as you go ahead. So several things needs to be seen. So I don't think we can encapsulate that in one or two sentences. So it's better that people take right advice or do the right research to take those decisions. Okay, fair enough. Okay. So अभी अगर हम ELS फंड्स की बात करें, ELSS फंड्स की, मोस्ट इन्वेस्टर्स जो है ना वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं ELSS फंड्स में, बल्कि जैसे ही वो 3 साल का लॉक इन खत्म होता है, लॉट ऑफ देम टेंड टू रिडीम मनी फ्रॉम देयर ELSS फंड्स. सो व्हाट इज योर एडवाइस टू सच इन्वेस्टर्स, और हमें ELSS फंड्स को कैसे देखना चाहिए इन आवर पोर्टफोलियो? I would say that's not the right strategy because equities are supposed to be investments for the long term, and 3 years is definitely not very long term for equity investors. And as far as
the performance of equity as an asset class as compared to some of the other tax saving instruments are concerned, it has always been much superior. So there is no reason to really sell out after 3 years. Yes, some investors may want to use the same money by booking the profits and using that to again fill up your ATC limit, etc. Yes, that's a good strategy one can do after the lock-in is removed. But otherwise, one can let it continue just like any other. And a little bit about one of my last few questions is when it comes to retirement corpus, right? हम सब बोलते हैं कि as a financial goal, retirement एक बहुत important financial goal होना चाहिए, and of course we are looking at goal based investing, right? तो एक तो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और we could look at multiple small saving schemes जैसे आपका PPFs हो गया, NFP हो गया, या फिर NPS हो गया. So, do you think it's wise to invest only in mutual funds for our retirement, या फिर हम दूसरे investment options में भी invest कर सकते हैं for fulfilling that goal? See, it all depends on one's risk profile and the needs post retirement, etc., and what kind of risk tolerance the investor has. I don't think it's one versus the other, or you can't have equities if you have small savings, etc. They can coexist. Right? End of the day, it's asset allocation. As long as you have not made any risky asset allocation bets, I think that will work for you. If you have taken a risky bet, then there will be periods like COVID or global financial crisis where it may lead to heartburn or maybe will lead to some decisions which are not optimum. But otherwise, I think there is no reason to believe that you can't have mutual funds if you have small saving or vice versa. So all can coexist. What proportion is something that you will have to decide based on your needs and risk profile. Perfect. So, Harsha, just one last thing. We would like to know a little bit about your personal investment journey in equities, and is there any advice that you would like to give first-time investors जो शायद अभी अपनी equity journey शुरू कर रहे हैं? So, tell us a little bit about your investment journey as well. See, our investment journey would be similar to what we do in our funds, right? Because we invest our surpluses, whatever we have in the funds that we manage. So it's not very different than our investors that we have in our funds. Yes, I would say three important things for any investor to look at. One is asset allocation. Second is regular investing discipline. And third is long-term focus. I think if you can manage these three factors, then I think the expectations are also set right, and the experience should also be quite good for any investor. Okay. And any book recommendations for our viewers? Any specific books that you think is going to help our viewers understand equity markets better? I think for those investors who are looking to invest in mutual funds, it will be good to read some of the investment classics. For example, the investment strategies of Peter Lynch, Warren Buffett, etc., which all talk about the common sense investing and also long-term focus and how it helps in terms of building wealth over a period of time. Because most people, as we see, when they're new to equity markets, they believe that money making is easy, or they would want to have the thrill of stocks going up every other day, etc., which is not possible, right? It may happen for a small period of time. You may be able to do that on a small corpus of your money, but to do that on a sustainable basis over a long period of time is what differentiates one from the other. And you will not be able to do that by just employing some of those momentum or any of those short-term tactics. So to that extent, to understand the benefits of long-term investing, whatever book helps you deal with that is what I would suggest. Yeah, great. Thank you so much, Harsha. Thank you for your time. We had a great time. I hope our viewers have a lot of takeaways from this particular session. So thank you for your time and for joining us today. Thank you so much. Wow, that was such a wonderful and engaging conversation with Mr. Harsha Upadhyaya. आप सबको आई होप ये एपिसोड अच्छा लगा हो, एंड आई होप यू गाइज आर ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. तो क्विकली जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ.
तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जिसकी वजह से जो है गोल्ड प्राइसेस शायद इस साल बढ़ सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी इन्वेस्टर्स अब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। So how do we look at gold as an asset class? तो मिस्टर उपाध्याय says कि गोल्ड एज एन asset class कभी भी हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में जो है हमेशा इक्विटी ने गोल्ड से ज़्यादा ही रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी बैंक्स जो हैं अब वो उन्होंने जो है एफडीज में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब काफ़ी इन्वेस्टर्स दे गेटिंग ल्योर टुवर्ड्स एफडी एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि शायद म्यूचुअल फंड्स में उनको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो मिस्टर उपाध्याय सेज कि अगर हम यूएस या अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात करें तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, सो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि बाय मार्च 2023 इंडिया में जो इन्फ्लेशन होगा वो करीब 6% तक होगा। इसका मतलब ये है कि एज एन इन्वेस्टर देयर विल बी नो नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न बिकॉज आरबीआई कैन गो स्लो ऑन रेपो रेट कट। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक करते हैं, स्पेशली से जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, या फिर ड्यूरिंग कोविड, या फिर जब मार्केट गिरी थी ड्यूरिंग द वॉर। तो इज इट हाउ इट शुड बी? तो मिस्टर हर्षा सेज कि एज इन्वेस्टर्स हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपना पोर्टफोलियो जो है वो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस जो हो रही हैं इन सब इवेंट्स की वजह से उसके बेसिस पे नहीं बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि वी शुड नॉट वरी अबाउट दिस मार्केट फ्लक्चुएशंस। और जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो वी शुड लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी, अगर हमारे पास उतनी रिस्क टॉलरेंस है तो। उसके बाद हमने ESG एज अ थीम के बारे में डिस्कस किया कि ESG एज अ थीम इज वेरी हाइप्ड अप, तो क्या ये हाइप जस्टिफाइड है? तो मिस्टर उपाध्याय सेज कि ESG इज वाइटल फॉर आवर प्लैनेट, और ESG थीम में जो है फोकस फंडामेंटल्स पे भी रहता है अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स, एंड देयर इज अ फाइन बैलेंस व्हिच इज क्रिएटेड हियर। फिर हमने म्यूचुअल फंड्स में कुछ और इंटरेस्टिंग थीम्स के बारे में बात करी, लाइक म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ IPOs में इन्वेस्ट करते हैं। तो मिस्टर उपाध्याय सेज कि अगर हम देखें तो लोग जनरली IPOs में थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और आइडियली हमारा जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस स्टॉक्स, और अगर हम IPOs देखें तो उनका उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं जब भी मार्केट क्रैश होता है। तो मिस्टर उपाध्याय सेज कि दिस इज द टाइम जब मार्केट कंसोलिडेशन होता है, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बहुत लंबा होना चाहिए। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि एज एन इन्वेस्टर हम अपने रिटर्न्स को कैसे जज कर सकते हैं फ्रॉम इक्विटीज। तो मिस्टर उपाध्याय सेज कि अगर आपको देखना है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं इन इक्विटीज, आपको इन्फ्लेशन के साथ उसको कंपेयर करना चाहिए। इन द लॉन्ग टर्म ये देखा गया है कि इक्विटीज जो है इन द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं। फिर हमने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बात करी कि 2022 में जो है इंटरनेशनल फंड्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सो इज दिस अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल फंड्स? सो मिस्टर उपाध्याय सेज कि फर्स्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे फंड्स हमेशा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, तो इंटरनेशनल फंड्स के लिए ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। फिर हमने मिस्टर उपाध्याय से उनकी लर्निंग्स के बारे में पूछा टू टेल अस अबाउट हिज लर्निंग्स इन इक्विटी, एंड ही सेज कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको रेगुलर डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, सही असेट एलोकेशन होना चाहिए, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उसके बाद हमने उनसे कुछ बुक रिकमेंडेशंस मांगी, लाइक वी डू विद ऑल आवर स्पीकर्स, एंड ही सेज कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वॉरेन बुफे, पीटर लिंच फॉलो करते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं टू बिल्ड वेल्थ ओवर लॉन्ग टर्म। So I hope you guys like this episode. Of course, please do hit the like button, share it with everyone, and please do subscribe to the Groww Mutual Fund channel, and I'll see you guys in the next episode. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.